Okay, today we are going to start the receptors. Okay, we will move with very good sequence, right? What are the receptors? What are the definition? What is the definition of receptor? What are the different types of the receptors? And what are the things related to receptors? Right? ये हम सारी चीजें क्या करेंगे सीक्वेंस के साथ लेकर चलेंगे. First, first you people should know what basically the definition of the receptor is. ठीक है? Okay. Now I am going to write the definition. This portion is related to physiology. Okay. And you people have to write with me. I will check in the class. Definition of receptor, and the question that will arise in you people's mind will be discussed at the end of the discussion, or when I will allow you people to ask me questions. Okay, now we are going to start with the definition of receptors. Okay, receptors are basically receptors are basically the macromolecules. Receptors are basically macromolecules molecules through which through which through which a ligand through which a ligand. What is ligand? I will discuss after few minutes. Okay. First, you people have to understand the definition of receptor. Receptor are basically the macromolecules through which a ligand is going to attach with it. With it means receptor. With it, and it undergoes 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 means happens. ठीक है. And it undergoes कौन receptor. ठीक है. Receptors are basically the macromolecules through which a ligand is going to attach with it, and it undergoes some conformational change. Conformational conformational, or as you people have studied stereochemical. Stereochemical का क्या मतलब होता है? The structure of the particular type of thing is going to be altered. Have you people have studied the stereochemistry? ठीक है, आप लोग stereochemistry पढ़ रहे थे. In the stereochemistry, what basically happen? The structure of the particular receptor or particular macromolecule is going to be changed. Let's suppose, for example, first it was liver rotatory, then it will be converted into dextrorotatory component. ठीक है. So this is conformational change, as you people have studied in the chemistry as well, the conformational change of some chemical structures. ठीक है. स्टीरियो आइसोमर्स आप लोग पढ़ चुके हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. ठीक है. तो दैट इज दैट conformational or transformational transformational, or you can say stereochemical, or you can say stereochemical change. ठीक है. या तो उसका कन्फर्मेशन बदल जाती है, या उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है उस रिसेप्टर का. ठीक है. या उसकी ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज है, तो ट्रांसफॉर्म हो जाता है. ट्रांसफॉर्म का क्या मतलब होता है? टू चेंज फ्रॉम वन पैटर्न टू अदर पैटर्न. ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है. ठीक है. फिर स्टीरियो केमिकल के मैंने आप लोगों को बताया, मतलब रिसेप्टर अंडरगो सम चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ दैट केमिकल. ठीक हो गया. उसका जो है ना वो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है. Receptors are basically the macromolecules through which a ligand is going to attach with it, and it undergoes some conformation or transformational or stereochemical change that produce that produce that produce a change in biological or physiological system or physiological system. Okay, so this is basically the definition of receptor.
Okay. Now come towards the other definition, that is ligand, that I have told you people a few minutes ago that I will discuss ligand. What basically the ligand is? Ligand क्या चीज होती है, तो हम उसको डिस्कस करते हैं. Ligand. Okay. Anything. क्या? Anything. Anything that is going to bind, anything which is going to bind with receptor, with receptor is ligand. Okay. It is very basic or very easy definition of ligand. Okay. Next is types of ligands. Next is types of ligands. Types of ligands or ligand. Okay. There are two types of ligands. There are two types of ligands. Two types. The one is, the first one is endogenous ligand. First one is endogenous ligand. Endogenous. Endogenous ligand. Okay. The second one is exogenous ligand. Exogenous ligand. You people have to write with me. Ligand. Okay. Endogenous ligand is the ligand which is going to be attached with the receptor and it produced in the biological system. Okay. For example, if I give you the example, that is hormones. Okay, the hormones perform their normal physiological activity by binding with their receptors, and you people know that hormones are going to be are going to be produced in the biological system. These are not coming from the outside or from the external source. And our body or the biological system or the physiological system has the ability to generate the hormone inside of the system. So that's why these are the endogenous ligand hormones. Then neurotransmitters. Then neurotransmitters. Neurotransmitters. And neurotransmitters, you people know that, like acetylcholine, norepinephrine, epinephrine, dopamine, serotonin, gamma aminobutyric acid. So these are the uh, endogenous ligand. Okay. Then is the exogenous ligand. For example, drug molecule, drugs. As you people know that drugs are not going to be produced in the biological system. These are coming from the outside or the external source. So that's why these are the exogenous ligand. Then uh, toxins, toxins or antigens. We will know that when the antigen is coming into your system, these are going to change or these are going to abrupt the biological system by binding with receptors. Yes. जब ये जो बाहर से एंटीजन आती हैं सारे अंदर जो आगे आपको बीमारी वगैरह करती है ना वो भी रिसेप्टर को आगे छेड़ती हैं. So that's these are the external ligands. Those are going to bind with the receptor like antigen. Antigen. Okay. So these are the exogenous ligand. Okay. Okay. Next, there is something new that you people are not familiar with. Okay. Familiar with. Listen. Listen. This is very important. You people should know it. Let's suppose, for example, I am going to draw here a receptor. Let's suppose, for example, this is the receptor on the surface of a cell. As you people can see, this is cell. This is cell. And this is receptor. This is receptor. Okay. And you people know that something or some molecules can enter the cell and some cannot enter the cell. Lipid soluble things can enter the cell and water soluble things cannot easily cross the cellular barrier, that is cell membrane. ठीक है. तो you people have to keep in mind forever जो हाइड्रोफिलिक चीजें होती हैं वो जो सेल की सरफेस के ऊपर रिसेप्टर होती है उनके साथ अटैच होके तो वो अपनी एक्टिविटी देती हैं. और जो चीजें लिपोफिलिक होती हैं ना, ये चीजें क्या होती हैं? लिपोफिलिक. दिस थिंग विल एंटर इनटू द सेल एंड विल प्रोड्यूस इस एक्टिविटी. ओके. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द थिंग विच कैन नॉट एंटर द सेल. ठीक है. मैं कहता हूँ ये एक लाइगेंड है.
मैं कहता हूँ ये एक लाइगेंड है। वी विल डिस्कस लेटर ऑन दीज थिंग्स एज वेल। इन चीज़ों को हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, अभी मैं आप लोगों को फंडामेंटल्स बता रहा हूँ। ठीक है, कि ये एक लाइगेंड था कोई, ये क्या था, लाइगेंड था। अब क्या हुआ, नो दिस लाइगेंड हैज टू परफॉर्म इट्स एक्टिविटी इन दिस सेल, कि इसने कोई चेंज लाना है सेल में। ठीक है, नो दिस लाइगेंड विल अटैच विद दिस रिसेप्टर, ओके, लाइक दिस, okay, and this receptor will undergo some conformational change that I have just told you people, and you people have understand conformational, stereochemical, or transformational change. Okay, this ligand is going to attach with the receptor, and this receptor is no will undergo some conformational change, and that conformational change might be like this. Okay, इस तरह होगा कि receptor की शक्ल बदल जाएगी. First the receptor was in a straight line. Now the structure or the texture of the cell has been changed, or sorry, receptor has been changed. ठीक है, तो अब receptor की stereochemical change आ गया. फिर क्या होगा, no there will be, क्योंकि ligand इधर अटैच हुआ था यहाँ पे, ligand now has attached with this surface which is outside of the cell. ठीक है, जिसको एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन कहते हैं. We will discuss later on this thing. First you people have to understand what I am going to say. Ligand will attach with receptor, receptor will undergo some conformational change, and it will produce its effect, definitely produce its effect in the system or in the cell. और सिस्टम क्या होता है, सिस्टम इज मेड अप ऑफ द सेल्स. ठीक है, प्रोड्यूस इफेक्ट. ठीक है, अच्छा वो प्रोड्यूस जो इफेक्ट हुआ कैसे हुआ, वो सेल के अंदर फिर सम केमिकल्स आर देयर. ठीक है, कुछ केमिकल बाहर हैं जिनको लाइगेंड कहते हैं, जो कि रिसेप्टर के साथ बाहर से अटैच होता है. फिर कुछ अंदर चीजें होती हैं जिनको इंटरनल 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 मैसेंजर्स कहते हैं, मैसेंजर्स, जो अंदर मैसेज लाते हैं. ठीक है, रिसेप्टर इज अ ब्रिज बिटवीन वन सिग्नल विच इज आउटसाइड एंड द अदर सिग्नल इज इनसाइड. ठीक है, तो जो लाइगेंड है वो आया था बाहर, उसने वो रिसेप्टर के साथ अटैच हुआ, रिसेप्टर का केमिकल चेंज हुआ. ठीक है, फिर अंदर इंटरनल मैसेंजर थे, उन्होंने प्रोड्यूस किया इफेक्ट. ठीक है, ओके, नो नो आई एम गोइंग टू गिव अ स्टेटमेंट हियर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दीज इंटरनल मैसेंजर्स और द केमिकल्स, दीज इंटरनल मैसेंजर्स आर नोन एज सेकंड मैसेंजर्स. इनको क्या कहते हैं, सेकंड मैसेंजर्स. इनको क्या बोलते हैं, सेकंड मैसेंजर्स. और ये जो लाइगेंड था जो कि बाहर था, जो कि सेल के अंदर एंटर नहीं हुआ था, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट मैसेंजर. दिस लाइगेंड इज फर्स्ट मैसेंजर, इज फर्स्ट मैसेंजर. ठीक है, द इंटरनल मैसेंजर्स, और आई विल गिव एग्जांपल्स. अभी हम आज हमारा बेसिक पहला लेक्चर है, तो अभी आप लोगों ने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करनी है. इनकी एग्जांपल्स क्या होती है हम आगे जाके देखेंगे व्हेन वी विल गो डाउन द रोड इनटू द डिटेल्स ऑफ द रिसेप्टर्स. ठीक है, फिर आप लोगों को समझ आएगी व्हाट बेसिकली द फर्स्ट मैसेंजर इज, व्हाट इज द इंटरनल मैसेंजर और सेकंड मैसेंजर इज. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू रीकैप होल द लेक्चर. ओके, we have done today the definition and ligand. Receptors are basically the macromolecules. And you people know what are the macromolecules. Macromolecules are carbohydrates, protein, lipids, and nucleic acids. These are the macromolecules, right? Through which it means that receptors are basically the protein. There might be receptors, might be protein. These might be lipids. These might be nucleic acids or lipids. कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स में भी प्रोटीन हो सकते हैं, रिसेप्टर्स में भी लिपिड्स हो सकते हैं, रिसेप्टर्स में भी न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं, और जिनको न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं, राइट. Through which a ligand is going to attach with it, and it undergoes some conformational change. And I have shown you people the conformational change or transformational change or stereochemical change. They produce a change in the biological or the physiological system. Okay, next is the ligand. Anything that is going to bind with the receptor is the ligand. Types of ligand: endogenous ligand, hormone, neurotransmitter. Exogenous ligand is drug, toxin, and antigen. Okay, and what is the first messenger, what is the second messenger? I have told you the first messenger, that the thing which is outside of the cell and it only bind with the receptor, and receptor then undergo conformational change and it produce effect by some other chemicals, those are inside of the system or inside of the cell. These are second messengers. Okay, ये क्या होते हैं, second messenger, and these basically produce the effect. दोनों इफेक्ट तो दोनों के जैसे हुआ है. एक चीज बाहर से आई थी, वो रिसेप्टर के साथ अटैच हुई थी, फिर अंदर कुछ चीजें चली थी और अंदर रिस्पॉन्स आया था. तो जो अंदर चीजें सिस्टम को चेंज करती हैं उनको क्या कहते हैं, सेकंड मैसेंजर. और जो बाहर चेंज लाती हैं, लाने की कोशिश करती हैं, जिस तरह लाइगेंड था, वो फर्स्ट मैसेंजर है. So this is all about the 2 days lecture. Only 2 days lecture is the basics or the fundamentals of the receptors and some basic concept, that is ligand, first messenger, second messenger. Now you people may ask question by unmuting yourself or by writing in the chat section. Okay, next is classification of receptors. Like how we can arrange the different types of receptors. ठीक है, तो this classification of receptor is based on the location of receptors, is based on the location of receptor. On the basis of, on the basis of location, on the basis of location, receptors
are classified into two types, into टू टाइप्स। पहली टाइप कौन सी है? पहली टाइप हम कहते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर। सेल सरफेस रिसेप्टर्स। सेल सरफेस रिसेप्टर। सेल सरफेस रिसेप्टर एंड सेकंड इज intracellular receptor. Second is intracellular receptors. राइट, अब इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब क्या है कि सेल सरफेस रिसेप्टर, व्हाट इज मेड बाय सेल सरफेस रिसेप्टर, व्हाट इज मेड बाय इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। अब इसका मतलब ये है, गौर से सुने आप लोग सब, कि लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज द सेल, ये सेल है हमारे पास, ये क्या है? सेल है। तो द रिसेप्टर्स दोज आर ऑन द सरफेस, ठीक है। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ हियर डिफरेंट रिसेप्टर टाइप्स, ठीक है, कि कौन कौन से जो है वो सरफेस के ऊपर है, ठीक है, उनको मैं ड्रॉ करने लगा। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक ये रिसेप्टर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, बिकॉज दिस दिस रिसेप्टर इज प्रेजेंट ऑन द surface ऑफ द सेल, और यू कैन से इट इज ऑन द सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है, ठीक है। सेम वाइज लाइक दिस देयर इज एन अदर रिसेप्टर ऑन द सेल, ठीक है, ये एक और रिसेप्टर है, because this receptor is again on the surface of the cell. Next, another one. Again, this is another receptor which is present on the surface of the cell. So these are the cell surface receptors, right? अच्छा, ये जो रिसेप्टर्स हैं, सेल सरफेस रिसेप्टर्स, ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में, इन द प्रीवियस लेक्चर, वी पीपल बेसिकली डिस्कस द लाइगैंड, ठीक है। तो कौन से रिसेप्टर्स के लाइगैंड्स, ठीक है, वो सेल सरफेस रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं। यू पीपल कैन से दैट कि लाइगैंड है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वो लाइगैंड किस तरह का हो कि वो सेल सरफेस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। अब उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स सुनिए आप लोगों ने, ठीक है। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल इफ आई से दिस इज लाइगैंड, दिस इज लाइगैंड, और लाइगैंड का काम क्या होता है? टू स्टिमुलेट द रिसेप्टर और टू कम्युनिकेट विद रिसेप्टर एंड देन प्रोड्यूस रिस्पॉन्स इन द सेल, ठीक है। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल ये लाइगैंड था, ठीक है, ये क्या था? लाइगैंड था। अब ये आया इधर, ये इधर इसके साथ बाइंड हुआ, ठीक है, और देन रिसेप्टर विल गिव रिस्पॉन्स, दैट माइट बी अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, ठीक है, या तो सिक्रीशंस बढ़ गई, या न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज हो गया, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन हो गई, रिलैक्सेशन हो गई, दीज आर द रिस्पॉन्सेस, दोज आर एसोसिएटेड विद द लाइगैंड स्टिमुलेशन, ठीक है। तो कौन से लाइगैंड, क्या, कौन से लाइगैंड ऐसे होते हैं जो सेल सरफेस रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं? लिसन एंड रिमेंबर, वो वाले लाइगैंड जिनका लार्ज मॉलिक्यूलर वेट होता है, लार्ज लार्ज मॉलिक्यूलर वेट लाइगैंड, ठीक है, वो वाले लाइगैंड जिनका क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट बड़ा होता है। डेफिनेटली अगर एक लाइगैंड है उसका मॉलिक्यूलर वेट बड़ा है तो वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकेगा? नहीं कर सकता। तो इसलिए उसको उस सेल के अंदर, उसको उस सेल के अंदर अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए सेल के ऊपर मौजूद जो रिसेप्टर होगा ना, उसके साथ बाइंड करके अपनी एक्टिविटी देनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि उसका साइज बड़ा है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा लाइगैंड कौन सा है? द अदर लाइगैंड इज चार्ज, चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स, चार्ज्ड मॉलिक्यूल, चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स। काइंडली स्विच ऑफ योर माइक्स। Charging molecule. I have already told you people, if the ligand or the drug molecule or anything which will be charged will not be able to cross the cell membrane, ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर एक ligand है वो चार्ज है तो क्या वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है? नहीं कर सकता वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस, ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता तो इट्स मीन दैट दैट ligand will perform its activity by binding with the cell surface receptor, because some portion of receptor is outside of the cell and some portion is inside of the cell. So that's a that ligand which is large or which is with large molecular weight,
and that ligand which is charged molecule. Because if the ligand will be charged, that ligand will not be able to cross the cell membrane, because you people know that cell membrane is negatively charged, right? Definitely, if the ligand is positively charged, it will be attached with that cell membrane and it will not be able to cross. And if the ligand is negatively charged, it will be repelled by the charge present on the surface of the cell membrane. So it will not be able to cross the cell membrane. So to perform the response by that ligand, which is high molecular weight and charge, will perform its activity by binding with the cell surface receptor. So that's why God Almighty has bestowed us with those cell surface receptor to perform normal physiological activities for the ligands with the large molecular weight and charge structure, right? Next is hydrophilic molecules. Other one is hydrophilic. Hydrophilic molecules, right? Hydrophilic. It means that अगर कोई ligand वो लार्ज मॉलिक्यूलर वेट क्या चार्ज है उसके ऊपर और हाइड्रोफिलिक है मतलब वाटर लेवल का, दैट इज बात, यू पीपल नो दैट सेल मेम्ब्रेन इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, ऑलरेडी टोल्ड यू पीपल, राइट? So so for for these ligands, these will perform 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 activity by binding by binding with cell cell surface receptors, right? Right? Is there any problem? Then I will ask you people to ask question later on. Next, intracellular receptors. Listen and remember. Intracellular receptor will be for those ligands, those will be low molecular weight with with low molecular weight with low molecular weight. Low molecular weight ligand, right? The ligands with the low molecular weight definitely will be having some tendency to enter the cell membrane. Okay. Next one is less charged molecules, because I have already told you people, we basically talk about relatively. We talk about relatively. If the charge on a molecule is higher, that will not be able to cross the membrane. If the charge is lesser, so as compared to the highly charged molecule, that may have some tendency to enter into the cell. Less charged molecules. Less charged molecules. Right. The next is hydrophobic. Hydrophobic molecules. Right. So all these ligands uh, perform perform activity form activity by binding perform activity by binding with intracellular receptors. Intracellular receptor means receptor inside of the cytoplasm or nucleus, both, right? By binding with intracellular receptor. Intracellular receptors. With intracellular receptors, right? So I have told you people the difference between why there is need for the cell surface receptor and intracellular receptors. If there are two cells and they want to communicate with each other by releasing different ligands, right? And if the ligand is with high molecular weight, with charge, or with hydrophobic characteristics, will perform or will transmit its signal to the neighboring cell by binding with the cell surface receptor, right? And if the ligand is low, definitely I will give the examples in the upcoming discussions regarding the molecules with high molecular structure, with charge moiety, with hydrophobic nature or hydrophilic nature, low molecular weight, less charge, hydrophobic molecule, right?
तो जिनका लो मॉलिकुलर वेट होगा, ठीक है, जो लेस चार्ज होंगे, जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होंगे, वो बाय बाइंडिंग विद द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर अपनी जो है वो कम्युनिकेशन करेंगे विद नियर बाय सेल। अब ये कम्युनिकेशन किस किस्म की हो सकती है? इट माइट बी एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन बिटवीन टू टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल ये एक और सेल था इधर, ठीक है, ये क्या था, एक और सेल था। इसने क्या किया, एक लाइगेंड को रिलीज किया, ठीक है। मैं वैसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। नो, दिस लाइगेंड विल कम एंड विल अटैच विद दिस फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, इट विल बाइंड विद दिस रिसेप्टर वट एवर द टाइप ऑफ दिस रिसेप्टर इज। ठीक है, ये बाइंड करेगा, ठीक है, और ये वाला रिसेप्टर जो है फिर इस सेल के अंदर क्या देगा, रिस्पॉन्स, राइट। ये इसने रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। तो जो इसने रिस्पॉन्स दिया है वो बेसिकली इस लाइगेंड ने इंड्यूस किया है। किसने इंड्यूस किया? लाइगेंड। आई एम जस्ट टेलिंग यू पीपल आर टू गिव द बेसिक्स रिगार्डिंग द सेल सिग्नलिंग, ठीक है, हाउ द सेल आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद ईच अदर विद बाय डिफरेंट टूल्स, एंड दीज टूल्स आर लाइगेंड एंड रिसेप्टर्स। ओके, अब ये जो लाइगेंड इस रिसेप्टर के साथ अटैच हुआ है, ठीक है, तो इसने रिस्पॉन्स जो इस सेल के अंदर करवाया है, इसका मतलब ये था कि ये जो लाइगेंड है इसके अंदर वो प्रॉपर्टीज हैं कि ये सेल के अंदर एंटर नहीं हो सकता, इसलिए इसने सेल के ऊपर मौजूद जो रिसेप्टर था ना उसको साथ अटैच हुआ, और फिर इसने कहा कि आई विल गिव इंड्यूस रिस्पॉन्स इन द नियर बाय सेल, बिकॉज माई मॉलिक्यूल इधर इधर माई मॉलिकुलर वेट इज हायर, और इधर आई एम चार्ज, और इधर माई characteristic is or the character is hydrophilic in nature, because I am unable to cross the cell membrane due to any of these three reasons. Okay, no, till now if somebody till now if somebody has any question regarding this discussion, he or she can ask. Okay, the next is types of intracellular receptor. Types of intracellular receptor क्या है? Types of intracellular receptors. What is meant by this intracellular? Intracellular mean it these receptors are in the circular boundary of the cell, and you people know that in the circular boundary of the cell there are two compartments, or you can say there is an inside compartment, and that inside compartment is distributed into different segments. Like I have told you people in the anatomy section, the protoplasm, the endoplasm, the ectoplasm, the cytosol, right? Okay, so these are the different intracellular portion of the cell. इंट्रासेलुलर का क्या मतलब है? सेल के अंदर, ठीक है। तो जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, इट्स मीन दैट सेल के अंदर है, इट्स मीन दैट दीज आर द इनसाइड ऑफ द सेल, ये इस एरिया के अंदर है, ये इसको भी मैंने ये शो किया, ये इस एरिया के अंदर अंदर है, ये सरफेस के ऊपर नहीं है, ये किधर है? सो ये सेल के अंदर है, सो दैट्स दीज आर नोन एज इंट्रासेलुलर, सो दैट्स दीज आर नोन एज इंट्रासेलुलर। अब इनकी टाइप्स कितनी है इंट्रासेलुलर की? इंट्रासेलुलर की टाइप्स कितनी है? दो। ओके, पहली तो ये हो सकती है, इट माइट बी साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, या साइटोसोल भी आप लोग कह सकते हैं, साइटोप्लाज्मिक और साइटोसोलिक रिसेप्टर। साइटोप्लाज्मिक और साइटोसोलिक receptors. Definitely, I will give examples later on. I'm just giving you the base of the cell signaling or ligand receptor interaction, right? The next is nuclear receptors. Next is nuclear receptors. So these are two types of cells. Definitely, as you people know that uh, this is the nucleus of the cell, right? And outer is the cytoplasm, right? Okay. If the receptor is here, if the receptor is here, let's suppose this is a receptor. Let's suppose this is receptor, and it is in the cytoplasm. It is in the cytoplasm. This is cytoplasmic receptor. This is cytoplasmic receptor, right? And this is nucleus. This is nucleus. And if the receptor is inside of the nucleus, is inside of the nucleus, it will be nuclear receptor. If the receptor is in the nucleus, this is nuclear receptor. Or you people can say that the nuclear receptors are some way or the other, or some segments of the DNA. ठीक है, वो DNA के segments होते हैं, इसलिए हम उनको न्यूक्लियर रिसेप्टर बोलते हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर आप यू people know that in the nucleus there is a DNA. Nuclear receptor.
Okay, till now, if you people have any question, you can ask. Okay. In previous lecture, we people basically classify the different types of receptor, in which we will talk about the cell-surface receptor and intracellular receptor, right? And today we will see the examples of these two types of receptors. Cell-surface receptor, which are present on the cell membrane, and intracellular receptor, which are inside of the cell, right? So, example of cell-surface receptor are, you people have to write with me, okay? Insulin receptor, insulin receptors. Right? Next is growth hormone receptors. Next is growth hormone receptor receptors, right? The first one is insulin receptor. Next one is growth hormone receptor. It means that as you growth hormone works by its सेल surface receptor, ठीक है? मतलब ग्रोथ हार्मोन आता है जिस सेल की उसने ग्रोथ करवानी होती है, तो उस सेल के ऊपर मौजूद अपने रिसेप्टर जो कि सेल की सरफेस के ऊपर होता है, उसको आके एक्टिवेट करते हैं और सेल की ग्रोथ करवाते हैं। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल कि ये एक सेल है, ठीक है, और ये ग्रोथ हार्मोन, इस सेल की इसने ग्रोथ करवानी है, इस सेल की, ठीक है, तो इसके ऊपर इसका रिसेप्टर होगा ये, ठीक है, जो भी जिस तरह का भी हो सकता है, तो ये आएगा, ये इसके ऊपर जाकर अटैच होगा और ये इस सेल की क्या करवाएगा, ग्रोथ, ठीक है। तो ये इस तरह एग्जाम्पल में दे रहा हूँ। तो ये वाला जो रिसेप्टर है, ये सेल सर्फेस रिसेप्टर, और है किसका, ये ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, राइट। ओके, नेक्स्ट वन इज टी एस एच रिसेप्टर। ये है टी एस एच रिसेप्टर, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर, राइट, राइट। नेक्स्ट वन इज एल एच रिसेप्टर। एल एच क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एल एच क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिसेप्टर। नेक्स्ट वन इज एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। नेक्स्ट वन इज एड्रीनर्जिक, एड्रीनर्जिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इनको याद रखना है, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स, ओके। नेक्स्ट वन इज cholinergic receptors. Next one is cholinergic receptors. Please don't write on the screen. Next one is dopamine receptors. Dopamine receptors. Receptors, right? There are a lot other examples, right? But I have given you people the most commonly used in our environment, we can say, in case of physiology and pharmacology, right? Okay, the next is intracellular receptor. Example of intracellular receptor. The first one is thyroid hormone receptor. Thyroid hormone receptors. Listen, TSH is thyroid stimulating hormone. That is cell cell receptor, right? But the receptor for thyroid hormone, through which thyroid hormone is going to perform its normal physiological activity, will be through intracellular receptor. It means that thyroid hormone will go into the cell, will bind with its receptor and perform its normal physiological activity, right? Next one is androgen receptor. Androgen
receptors. The next one is estrogen receptor. Estrogen receptors. You people have to remember these examples. Testosterone receptors. Testosterone receptors. Right. Next is progesterone receptor. Progesterone receptors. And the next one is steroid receptors. Steroids receptors. Okay. Next one is vitamin D receptor. Yeah? Vitamin D receptor. Right. So these are the examples of different types of cell surface receptor and intracellular receptors, as we discussed in the previous lectures. These intracellular receptors and cell surface receptors. It means that if the receptor is inside of the cell, its ligand has to enter into the cell. Otherwise, that ligand will not be able to perform its activity. Okay, next is types of receptor. These are the classification that was broader in nature. Now come to the types of receptor. Major families, as you people can say, right? The first family is ion channel receptor. First family is ion channel receptors. Right? Second one. Second one is G protein, very important. G protein coupled receptor. Other one is G protein coupled receptor. G protein coupled G protein coupled receptor. Right? So second family. This one is the first family. Second family. Third one is the third one is enzyme linked receptor. Third one is enzyme linked receptor. Enzyme linked receptors. This is the third family. Next one is fourth. Intracellular intracellular receptors. That is fourth family. Right? So now down the road, listen and remember. Down the road, we will be discussing these four types. Then our receptors will be finished. First, we will discuss ion channel receptor. Then we will discuss G protein coupled receptor, which is one of the biggest family of the receptors. And in majority of the receptors are G protein coupled receptor. Okay. Next one is enzyme linked receptor, another major family. The fourth one is intracellular receptor. Okay. If there is any question, you people can ask. Otherwise.